Namaskar. Welcome to another episode of Navimya's podcast, Jai Shri Ram Vande Mataram. So today, as you can see from our title description, we are going to talk about an article written by Mr. Sanjeev Sanyal in his book. The book name is, if you can see the book here, India in the Age of Ideas, Sanjeev Sanyal, Selected Writings from 2006 to 2018. So this is a very fascinating, interesting book which I picked up a couple of months ago, and I have gone through the book uh, twice actually. And the articles which are mentioned here are quite fascinating in terms of it deals with ideas on history, economics, urban planning, basically on statecraft and governance. And the way they are written. So these are articles written by Mr. Sanjeev Sanyal in various newspapers. So this book is a collection of those articles published as a compendium as a book. This book is published by Rupa. So before we initiate our reading session, I'll first like to thank Mr. Sanyal for writing or compiling this book, compiling these articles and putting as a book. So the book can be bought on various platforms, including offline and online. Okay, fine. So now what we'll do is we'll first show you where you can buy this book. Very important for our podcast that we share the details so that people who want to buy this book, where they can get this book. So first of all, this book is available in Amazon. You can get the hardcover, the paperback, and also on Kindle it is available. So whichever you feel like you're okay, you can go ahead and buy this book. So trust me on this. Like this is really, really, really good writing and solid content in terms of the ideas are discussed, and specifically ideas from the perspective of Indic civilizations. So, and we also have like on the Goodreads, you can see the rating it has received, 3.84 rating. So a lot of people have appreciated the content of the book, and there are people who are actually writing it that how good the book is. It's also organic in nature, so it has good reviews. So the book is also available from one more portal. Let me see. So if you do not want to buy from Amazon, you can buy it from other portals as well. So you have a book set go is there. So there are various portals available. So whichever feel you are okay, you can go ahead and buy this book. And also I have the physical copy of the book with me, but I also have the PDF with me. So we will be reading from the PDF itself. So we'll give a few minutes for people to join in before we starting the reading session. And let me just give the invite to everybody so that people can join. So guests are most welcome to come and read with us, discuss the book contents. So I have pinned it. So people who want to join, do come in. We appreciate people coming here and reading with us, sharing their opinions. Okay, we now see we have quite a good audience coming in. So we'll start reading the book. But feel free to join in on the reading session. Anybody wants on the audience wants to read with us or read, please go ahead and use the link and join, and we'll allow you to read with us. So without any more delay, let's go ahead and delve into this fascinating article that we're going to describe today. So, okay, so now I'm going to enlarge the text. Audience, do let me know if you are able to read the text. Okay, audience, is the text visible? So that do let me know with a thumbs up so I can go ahead and start reading the book. And we also have a presentation created for the session as well. So based on the content of the book. So we'll also go to the presentation and discuss the ideas which are there in the book in a more condensed form. Okay, very good. Let me just do that.
Is that okay? Okay, I have zoomed it. Do you want a bit more? Because if you zoom it more, it will go out of window. You're able to read it? Okay, very good. So we'll go ahead and read the book. So let me actually show you the exact chapter. So it's important that we show what we are reading it. 56. 56. So this is how it looks like in the physical book. So this is how you reread it. So let's go ahead. The debate over a need to rewrite Indian history textbooks is heating up, and yet again, it is likely to spiral into an ugly political spat. Sadly, this debate will distract from the many sensible reasons history books needs to be changed. Indian history is mostly written from the perspective of Delhi or, at most, northern India, as if the rest of the country barely existed except as mere provinces. The average Indian student, for instance, will learn almost nothing about the great Satavahana, Vijayanagar, or Chola empires of the southern India. Unless you live in the northeast, you may never have heard of the Ahom kings who ruled Assam for 600 years and even defeated the Mughals. This absurd imbalance needs to be corrected. Moreover, history is not just about rise and fall of empires, but but also about other streams. Let me other streams of history. For instance, Indian textbooks say almost nothing about the country's rich maritime maritime history beyond a passing reference to Chola naval raids on Southeast Asia. Students learned very little about the thriving Indo-Roman trade or the exploits of ancient Odia merchants who pioneered sea routes across Eastern Indian Ocean. The great influence of Indian civilization on Southeast Asia is barely mentioned, if at all. We hear about groups who came to India as conquerors, but nothing of people who came to India peacefully as traders and refugees. Parsis and Jews from the west, and the waves of Southeast Asian tribes from the east. Similarly, even university level textbooks are written as if the geographical landscape of the country is static. Little is mentioned of the shifting. The chapter is very, very small, so I think we'll have a lot of time to discuss a lot of things. And we may actually read one more chapter as well if time requires. Uh, Acha, Hindu Chara Didi, this book is a compendium. So Mr. Sanjeev Sanyal wrote a lot of articles, and this book is a accumulation compendium of articles he wrote from 2006 to 2018. So it's an article written on a newspaper. So we will see that data, and those articles are compiled into a book which he wrote. Okay. Little is mentioned of the shifting coastlines and rivers, changing wildlife, and evolving cities. The extraordinary history of Indian science is similarly ignored or, as some would argue, deliberately downplayed. There is more than adequate evidence that ancient Indians made great advances in metallurgy, medicine, mathematics, and so on. As others have also pointed out, by downplaying genuine scientific contributions, textbook writers have created a vacuum that is
filled with claims of flying chariots. Very interesting. Very interesting. Okay, so audience, what's your comments on this specific comment made by the author? And that's quite relevant for also our today's discussion. He mentions that by downplaying genuine scientific contributions, textbooks writers have created a vacuum that is filled with claims of flying chariots. So, I think all of us who are in the social media space would see a lot of reels, short videos, or even podcasts, serious podcasters who would talk about a lot of overarching claims regarding Indian science, from helicopters to a lot of nuclear weapons itself. So I am not here to actually tell them whether true or false. That's something which history and research would decide. But the author creates a very, very valid point that the omission and maybe in somebody's opinion, deliberate omission of these facts have created a kind of vacuum space where a lot of people are occupying space and they may not have the credentials or the verified claims to actually make those claims. So when we see a lot of social media influencers and also people who are doing podcasts, people who are writing books, we also seen books being written on these claims. And this space was created as a manifestation, as an effect of the history books omitting these details in the first place. So it's very, very interesting to understand that whenever we something happening, it doesn't happen on its own. There are factors which are actually contributing to that specific aspect of narrative being driven now. So it's important to understand that something is happening right now. The seeds are sown far, far into the past itself. And whatever happens right now is a manifestation, is a effect of what happened previously. So history books deliberately or maybe unknownly, they have removed those specific instances of Indian science being advanced at that time. They are being removed, and as part of that impact is that we see a lot of kind of pseudoscience being propagated on social media itself. Yeah, I'll not have to name any podcast, so you can do that. Okay, so we'll read that. Most readers will be surprised to know that many well known events and characters of Indian history are based on very thin evidence. Emperor Ashoka is much revered for having turned into pacifist after witnessing the human cost of his invasion of Kalinga. See chapter titled Ashoka, the Not So Great, page 18. However, texts such as Ashoka Vadana clearly mention major massacres of Jains and Ajivikas that he ordered long after his supposed conversion. The author is talking about Ashoka embracing Buddhism, uh, being a Hindu, okay, from a Hindu faith. The author is talking about that we have read on history books that okay, Ashoka embraced Buddhism because he saw a lot of bloodshed and violence, which occurred in the Kalinga War. And but the author is giving data and details that this is not the correct history which is written in our textbooks. So he mentions that there are evidences, written evidences, that Ashoka was continuing his violent streak in terms of wars and violent suppression of Jains and Ajivikas, a philosophical offshoot of Hindu philosophy, and it continued. So this narrative that Ashoka was a great peaceful king when he become Buddhist was something which is a kind of false narrative, which is being written, which has been there in our textbooks.
that ordered long after his supposed conversion. Far from being Ashoka the Great, the evidence suggests an unpopular king whose empire began to crumble while he was still alive. Even the regret over Kalinga war looks suspiciously like propaganda given that none of the inscriptions in Odisha mention it. Very important. Yeah, I'm looking at the chat, so keep going. I'll take those things. And people, if you want to come and contribute, do join us. We encourage people to share their opinions because it's important that the common person, the public, has their say in whatever we are reading about. Given that none of the inscriptions in Odisha mention it, not only have mainstream historians built grand stories on wobbly evidence, they are also strangely impervious to the continuous flow of new evidence being thrown up by archaeology, genetics, climate sciences, and so on. Thus, we are still taught about the Aryan invasion in 1500 BC that destroyed Harappan cities, despite the fact that genetic and archaeological. Yeah. So, yeah. Uh, yeah. Wait, where I was. Hmm, nice. Yeah, strangely impervious to the continuous flow of new evidence being thrown up by archaeology, genetics, climate sciences, and so on. Thus, we are still taught about the Aryan invasion in 1500 BC that destroyed Harappan cities, despite the fact that genetic and archaeological studies do not support a unidirectional migration invasion from Central Asia. The date of 1500 BC was always arbitrary, and we have good reason to believe that climate change caused the decline of Harappan cities 5 centuries earlier. This is not to suggest that everything good about Indic civilization is indigenous origin. Over the centuries, we gained from absorbing foreign ideas and influences, especially in food, architecture, and language. Try to imagine India without the chilies and tomatoes brought by the Portuguese. Yeah, cricket and railways brought by the British, or the Taj Mahal built by the Turco-Mongol emperor. However, it is also true that the same foreign invaders caused the death of millions of people through warfare and famine. Indian students need to be told about both the good and the bad. Readers will be amazed by the extent to which colonial era ideas are casually perpetuated. For instance, whenever I write an article mentioning ancient Indians, I have noticed that a sub editor will often put the word Indian in inverted commas. It is probably done unconsciously, but it is a continuation of colonial era propaganda that Indians were not a nation. Okay, we'll pause the reading and we'll see some comments and then again we'll start. And we also have a presentation. So people, if you want to see the presentation, do let me know. I have that ready as well. That's a very interesting comment made by RS. Our homes defeated Mughals 17 times and we have never heard of this. Okay, so we'll continue with the reading.
Okay, readers will be amazed by the extent to which colonial era ideas are casually perpetuated. For instance, whenever I write an article on mentioning ancient Indians, I have noticed that the sub editor will often put the word Indian in inverted commas. It is probably done unconsciously, but it is also continuation of colonial era propaganda that Indians were not a nation till the British turned up. For obvious reasons, colonial writers blatantly disregarded heaps of evidence that Indians had a strong sense of belonging to a civilization for thousands of years. What is less obvious is why we continue to perpetuate the colonial era idea. Very interesting question raised by the author. That what is less obvious is why we continue to perpetuate the colonial era ideas. Indian history textbooks need to be rewritten. Opponents will argue that the current government will use this opportunity to insert. Okay, uh, pin the link. Okay, well, let me just go ahead and pin the link. Okay, I should have done that earlier, but thanks for reminding this. So this is the link. You can go ahead and buy this book. So we are going into a very interesting territory now. Right-wing biases, but this is no excuse for perpetuating outdated scholarship and the biases of colonial and Marxist historians. Indian historians tend to mix up the evidence with their opinions. Very interesting and very poignant mentioned by the author that history is written as per the opinions of the historians when they're writing it. And that should not be the case in general. That a historian should take the data, take the evidence, and then put forward that evidence and write history. Let the audience decide what they want to believe and believe in based on the data and evidence, not put his own opinion on the history books. That is something which should not be done. This happens everywhere to some extent, as all history is written from some perspective, but mainstream Indian historians are notorious for doing so. Perhaps one way forward for the next generation of textbook authors is to separate the hard evidence from the interpretations. This will result in two good outcomes. First, we will make the author's opinions more transparent. Second, it will encourage students to think more critically and draw their own conclusions. Additionally, this will have the advantage of making the subject more an exploration of the past rather than memorizing dates. Very interesting and very poignant point. I think we have all read history in our schools when we were kids, and we know that okay, we were taught just remember dates, who died, and when they died. So beyond that, we did not enjoy history as we read now. That's a very practical example given by him. So this ends this article. So this article was published. This piece was originally published in the Mint, June 2015. So we will be reading one more chapter of this book. But if audience has any questions on this, or if they want to come and discuss this specific topic, you can come, or else you can say I have this book with me, so I can discuss few more chapters as well. He is not there today, but not a problem. I think others also can come and contribute if they want. So do have your say. Let's see. Tell me which chapter we should read now. Let me actually share one more thing.
Okay, I have the full PDF with me, so let me just open this and then we can take audience poll that which chapter we want to read next. That would be an interesting thing. So if you can see in the left corner, we have the chapters mentioned here. So if the audience wants to, we can read few of it. So let me just read it out for the audience because you may not be able to see the chapters. So the first chapter is, first article of this first para is the architecture of Hinduism. This one article based on Hinduism, the architecture of Hinduism. Then we have one more article, India must start working to reverse the plunder. Zoom, I don't think I will be able to zoom it from here, but let me try anyway. I think we have one more guest. Okay, our Namaste, Mr. Hindi imposition guy. नमस्कार आपका दादा। हिंदी आपका हिंदी साम्राज्य स्थापित हो, ये हम सब चाहते हैं। हाँ, और एचवी दीदी देखो मैं आ गया, है ना, हाँ बिल्कुल। हिंदी इम्पोज करने। ओके, और सेकंड आर्टिकल, संस्कृत भी मैं नहीं किया। अबे एक जरा रुकना, आई थिंक वी गॉट द आंसर। So okay, so Rishi is talking about second article. Second article is India must start working to reverse the plunder. Is that one talking about Abhay, Rishi? Let me actually share it, so it will be there. So this is the article that Rishi mentioned he wants us to read. This article name is India must start working to reverse the plunder. Rishi, do confirm if you want this to be read. Okay. Abhay, आप बोलिए regarding our first article that we have read. So what is your comments, your opinion on Mr. Sanyal's case that Indian history textbooks needs to be rewritten? हाँ, तो सभी को नमस्कार और जय श्री राम। हाँ, तो जो आपने पढ़ा ये ये नई बात नहीं है, पिछले 10 साल से ये बात चल रही है, पर फिर भी लोगों के लिए जानना बहुत आवश्यक है, विशेष रूप अच्छा, से जो लोग अभी 16-17 वर्ष के। मैं आपको थोड़ा रोकूंगा। आपने कहा कि ये बात चल रही है 10 साल से। क्या क्या मैं सम आपने कहा कि ये बात चल रही है 10 साल से? क्या इससे पहले इसके बारे में किसी ने बात नहीं किया है? मतलब हाँ, बात किया होगा पर ये बात बाहर नहीं आई। क्या है कि बात ये है कि उस समय इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के जो टूल्स थे, उस समय सोशल मीडिया की इतनी पहुंच नहीं थी और उस समय सरकार भी वैसी नहीं थी जो हमारी बातों को बाहर आने देती। अभी ये सरकार भले ही बहुत कुछ ना कर रही हो, पर एक काम है इनका अच्छा कि ये लोग हमारी बातों को दबाती नहीं है, तो आर्यन इन्वेडर को इन्वेट करने देती है, तो ये अच्छी बात है इस सरकार की। अच्छा, एक चीज जो मुझे लगता है कि उस पर हमें बात करनी चाहिए, वो है कि प्राइमरी दो धड़े हैं, दो आपके क्या बोलते हैं, दो पोल्स हैं। जो एक ग्रुप ये कहता है कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही है या कम कर रही है, और एक गुट कहता है कि नहीं, सरकार कर रही है, जो वो कर सकती है, इससे ज्यादा संभव नहीं है। और मैं इस प्रश्न को इस तरह से फ्रेम करूंगा कि जब बात आती है, जो इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, ऑथर ये कह रहे हैं कि वो सही नहीं है या
अगर इस तरह से कहें कि वो कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे ओमिशंस हैं जो इतिहास हमें पढ़ा जा रहा है वो पूरा नहीं है, उसमें कुछ हिस्से जैसे इतिहास जो हमारे ईस्टर्न का है, जैसे ऑथर ने कहा कि जो अहोम किंगडम था, जो अहोम राज्य था, अहोम किंगडम के बारे में नहीं लिखा गया है। हमारे जो साउथ है, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, डेक्कन प्लेटो जिसको कहते हैं, तो डेक्कन का जो इतिहास है साउथ का, वहाँ चोलास थे, वहाँ पर और भी बहुत सारे किंगडम्स थे, विजयनगर किंगडम था, तो उनके बारे में सिर्फ एक रेफरेंस दिया गया है, उनके बारे में बात नहीं की गई है। और लोग ये कह रहे हैं, आपने जहाँ कहा कि जब से सरकार आई है बीजेपी की 2014 के बाद, तो इसको तुरंत ही चेंज करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या जानबूझ के नहीं किया गया है, या ये इसको चेंज करने में अक्षम है, या ये नहीं कर रहे हैं फॉर अदर थर्ड रीजन विच यू कैन टेल? थर्ड रीजन तो मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है थोड़ी अक्षमता है ये इनको। मुझे लगता है कि एकेडेमिया की इम्पोर्टेंस उतनी अच्छे से समझ में नहीं आती, और भाजपा आरएसएस पर यह आरोप लगते रहे हैं बहुत सारे लोगों से कि ये लोग एकेडेमिया की ओर हिकारक भरी दृष्टि रखते हैं। तो यदि आपकी सोच वैसी होगी तो फिर तो आप समझेंगे नहीं ना कि विश्वविद्यालयों के माध्यम से या आपकी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से आप लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं, नीतियों को कैसे प्रभावित करते हैं। अब आप देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ, नैरेटिव का कितना प्रभाव होता है ऊपर से। झारखंड में जब इस बार चुनाव हुए, तो हेमंत बिस्व शर्मा जो भाजपा के नेता है वो बोल रहे थे हिंदू और ट्राइबल। ठीक है, अपने भाषण में बोल रहे थे हिंदू और ट्राइबल, अर्थात उन्होंने ट्राइबल को हिंदू से अलग कर दिया। तो ये जीत तो उनकी हुई फिर, क्योंकि हम कहते हैं कि ट्राइबल संस्कृति भी हिंदू संस्कृति का अंग है। तो एक प्रकार से आपने वैचारिक या ये नैरेटिव के स्तर पर हार मान ली। तो भले ही हम कहते रहे कि ग्राउंड वर्क करेंगे, पर ऊपर से जो नैरेटिव आता है आपके विद्यालयों के माध्यम से जो पढ़ाया जाता है, उसका प्रभाव आपको धरातल पर कभी ना कभी देखने को मिलेगा। तो मेरा तो मानना है कि ये लोग जब तक इतिहास के पन्नों में परिवर्तन नहीं करेंगे, ये जो आप जीत रहे चुनाव, आपको ये भी समझना होगा कि आपका विपक्ष बहुत कमजोर है और उसके नेता बड़े महान नेता है, इसीलिए भी आप जीत रहे हैं। अब कोई ढंग का नेता आ जाए, भले ही वो वामपंथी हो, वो जीत जाएगा, क्योंकि अंत में जो नए बच्चे निकल के आ रहे हैं वो तो विद्यालय में यही पढ़ते हैं ना कि आर्यन ने इन्वेट किया था और मुगल महान थे और खिलजी महान थे और बख्तियारपुर नाम रखा है नालंदा का, वही सब देखे थे। तो उसको तो आप, जब तक आप व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन करना आरंभ नहीं करेंगे, उसका दीर्घकालिक परिणाम नहीं दिखेगा। आज यदि कांग्रेस आ जाती है, इसको पलटने में, जो हिंदुत्व का जो विमर्श बढ़ा है, इसको पलटने में उनको क्षण भर नहीं लगेगा। 5 साल बाद आप वही देखेंगे जो यूपीए काल में था। ये मेरा मानना है। बहुत अच्छे। तो मेरे इसमें कुछ विचार हैं जो मैं रखना चाहता हूँ, और उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कहना कि बहुत सारे लोग शायद आना चाहते होंगे और हमारे साथ बात करना चाहते होंगे, पर वो शायद थोड़ा सा डर रहे हैं कि कैसे मैं बात बोलूंगा। तो मेरा ये कहना है कि आप मत डरिए कि आपकी आवाज कैसी होगी या आपको लोग कैसे परसीव करेंगे। ठीक है, आपके पास इतना होना चाहिए कॉन्फिडेंस कि आप आकर अपनी बात कहें। डू नॉट वरी अबाउट व्हाट अदर पीपल विल से। सो ये डर से हमको निकलना पड़ेगा। ओके, सो एक चीज जो मैं चाहता हूँ कहना, आपने ये कहा कि जो भी चेंजेस हुए हैं अभी तक, जो भी थोड़े बहुत हुए हैं, जैसे जैसे तुम्हारे राम मंदिर का जो था, और राम मंदिर का जो था ये थी परिक्रम था, उसको टेक्स्ट बुक्स में ऐड किया गया है। आपने कहा कि अगर ये जो सरकार है ये अगर नहीं रहती है तो वो टेक्स्ट बुक फिर से चेंज हो जाएंगे। ओके,
मेरा ये इस पे कहना है आपके इस वक्तव्य में कि उनका जो इकोसिस्टम है या सिस्टेमिक अप्रोच है जो होल्ड है ऑन एकेडमिया, क्या वो 10 साल से है, 50 साल से है, 100 साल से है? अम, जैसे उनका मतलब अगर लेफ्टिस्ट एक एकेडमिया का की बात करूं तो उनका सच में होल्ड आरंभ हुआ था इंदिरा गांधी के टाइप से। उन्होंने लेफ्टिस्ट को दे दिया था एजुकेशन। उससे पहले भी कुछ ऐसे लोग सेक्युलरवादी लोग थे। तो हाँ, 40-50 वर्ष से है। और मैं समझ सकता हूँ आप किस दिशा में इंगित कर रहे बात को कि इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं हो सकता। पर बात यह है कि कहीं से तो आरंभ करना पड़ेगा। आपके यूनिवर्सिटी में अभी भी कट्टर लेफ्टिस्ट बैठे हैं। आपके यूपीएससी में भी वैसे ही लोग हैं। तो ये बहुत, अब जितना टालेंगे स्थिति उतनी विकट होगी। हमारे पास समय उतना है नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ, कभी ना कभी जी। आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत बड़े जनसंख्या की स्वीकार्यता है आपको कि आप कीजिए। पर भाजपा की समस्या ये है कि वो ग्लोबल लेफ्ट के वैलिडेशन के पीछे भागते हैं, ये मैंने देखा है। और उस चक्कर में ये लोग डरते हैं। मैं आपके इस बात को काउंटर करूँ थी। मैं यहाँ बैठा हूँ, आई विल स्पीक विथ रेफरेंसेस एंड एविडेंसेस, ठीक है। मतलब मैं मेरे ओपिनियंस नॉर्मली नहीं देता हूँ किसी भी चीज़ में, और बोलता हूँ मैं बोल दूंगा कि ये मेरा ओपिनियन है। पर जब मैं ये कह रहा हूँ कि 50 साल से, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो भारत का जो पहला एजुकेशन एजुकेशन मिनिस्टर था वो कौन थे? आपको शायद आपको पता होगा कौन थे, लोग जानते होंगे, आप गूगल कर लें कि इंडिपेंडेंट भारत का पहला मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन था। तो ये 50 साल की तो बात है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस है, वो तो 200 साल से इवॉल्व होते आया है, जब अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि आज के जो लॉज हैं, आज के जो एजुकेशन हैं, जो भी चीजें चली हैं, क्या वो सिर्फ रिफ्लेक्ट हो रही हैं 50 सालों में? हाँ, मैं आपकी इस बात से अग्री करता हूं कि द इंटेंसिफिकेशन ऑफ leftist ideology on our education got influence, and it got virulent, it got more prominent, okay, in after 71 onwards। ये मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जब इंदिरा गांधी आई थी तब उन्होंने ये किया था आफ्टर इमरजेंसी के बाद। पर ये जो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज हैं, फ्रॉम नॉर्मल लॉज टू एजुकेशन टू वट एवर एल्स वी सी, वो एक कंटिन्यूएशन है 200 सालों का। तो आज जो हम देखते हैं इकोसिस्टम, आज जो देखते हैं गवर्नेंस स्ट्रक्चर, आज जो देखते हैं जैसे स्टेट फंक्शन करता है, ये एक 200 साल का एक परिक्रमा है। ये ना तो ना बात 10 साल की है, ना बात 20 साल की है। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई स्ट्रक्चर 200 साल से धीरे धीरे पनपा है, अगर आप चाहेंगे कि उसको आप 10 साल में इतना चेंज कर दें कि वो बिल्कुल पलट के रह जाए, शायद वो विशफुल थिंकिंग होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं करना चाहिए। देखना पड़ेगा कि आप जिन्हें ये कह रहे हैं करने के लिए, क्या वो काम करने के सक्षम है कि नहीं। अगर आपने किसी को वोट दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी चीज काम कर देंगे। नहीं, मैं देखिए, इसका पहली बात तो ठीक है, आप बोल रहे हैं कि 71 से पहले भी एक प्रकार की व्यवस्था बन रही थी, ठीक है, मान लिया। पर स्वतंत्रता से पहले देखिए, तो उस समय हमारे हिंदू पक्ष से भी बहुत कुछ लिखा जा रहा था, बहुत सारी विचार फैल रहे थे, संस्थाएं थी। और अंग्रेज आधुनिक जो भारतीय व्यवस्था है वो उतनी उतना उन्होंने हिंदुत्व को नहीं दबाया है जितना आधुनिक भारतीय सरकारी व्यवस्था ने दबाया है। दूसरी बात ये है कि देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी को जिसमें स्वीकार्यता नहीं है, जिसको लेके विवाद हो जाएगा, वो बदलना चाहिए। जिसको लेके आपको स्वीकार्यता मिली, वक्फ बोर्ड,
आपने उसको टाल दिया 8 महीने के लिए। आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी स्वीकार्यता मिल जाएगी, जैसे आपने वक्फ बोर्ड के लिए प्राप्त की, यदि आप अच्छे से तर्क वितर्क करें। आपको टी में भी मिल जाएगी आपको वो स्वीकार्यता। आप देखिए आरटी कब आया था? आरटी यूपीए के समय वो अमेंडमेंट हुआ था कि मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को आपको देना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, 25% बैकवर्ड क्लास को देना पड़ेगा। उसके कारण हिंदू सारे संस्था, शैक्षणिक संस्था बंद होने लगे। तो ये सब आप कर सकते हैं, पर आप हर एक अमेंडमेंट का पॉलिटिकल माइलेज उठाना चाहते हैं, उसका बहुत बड़ा विषय बना के। तो इसमें भाजपा की भी एक प्रकार से ये है, जिसको बोलते हैं ना कि एक सुस्ती, एक आलस्य है कि अरे पका पका के खाओ। ये लोग, आप देखेंगे, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर उत्तर मांगा जा रहे हैं, लोग टाले जा रहे हैं। सीए को 5 वर्ष क्यों टाला भगवान जाने। कोविड आ गया, कोविड का क्या लेना देना था भगवान जाने। तो ये लोग बार बार ऐसे जब टालते हैं ना, अकारण टालते हैं, तो वो बात तो चुभेगी, स्वाभाविक सी बात। जी, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं इससे अग्री भी करता हूँ, पर मेरा काम है टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि अगर मैं एक बाजार में बैठा हूँ और मुझे सब्जियां बेचनी है, तो मैं वही करूंगा जिससे मेरी सब्जियां बिके। मैं ये नहीं करूंगा कि मेरा जो पास वाला दुकानदार है उसका माल बिके। सही ना? हम्म। तो भाजपा यहाँ पर आई है करने के लिए, राजनीति करने के लिए, राजनीति। तो ठीक है। आज आज जैसी राजनीति हो रही है वो उसी हिसाब से राजनीति करेगी ना, क्योंकि तो वो वही कर रही है। तो हमें हमें ऐसा क्यों लगता है, होलियर एंड दाव जिसको कहते हैं, कि भाई राजनीति जो जैसे हो रही है 50 सालों से, क्या भाजपा उस राजनीति को चेंज कर देगी 10 सालों में? एक तो ठीक है, भाजपा जिस प्रकार से राजनीति कर रही है आप कह रहे हैं, पर देखिए भाजपा जब जब ये सबका साथ सबका विकास पर गई, 2024 के चुनाव में क्या हुआ, 240 पर आ गए। ठीक है, बहुत जन ने आलोचना की कि आपने हिंदुत्व पर बात नहीं की, या आप जब देखते हैं कि आपकी स्थिति बिगड़ने वाली है तब आप हिंदुत्व पर आते हैं। उससे पहले आप सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका संडास करते रहते हैं। तो अभी जब महाराष्ट्र में आप चुनाव जीत गए हिंदुत्व हिंदुत्व करके, ये वचन दे करके कि हम वक्फ बोर्ड लाएंगे, फिर आप पीछे हट गए। अब सर संचालक बोल रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे ये शिवलिंग मत ढूंढो, जब संबल की बात चल रही है। तो ये सब से बात बिगड़ती है। ठीक है, तो ये सब में स्वाभाविक है गुस्सा होना, और भाजपा की राजनीतिक विवशताएं हो सकती है, पर मैं मानता हूं मैं भाजपा का व्यक्ति नहीं हूं। वो मैं मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं मैं हूँ। मैं आपको भी नहीं कह रहा हूं कि भाजपा का व्यक्ति है, हम में से कोई हम्म, भाजपा का व्यक्ति नहीं है। तो मैं भाजपा के जैसा नहीं सोचूंगा। मुझे भाजपा से जो चाहिए वो मैं मांगूंगा। अब वो करना नहीं करना, वो कैसे करना है वो सोचे। मेरा काम है मांगना, मैंने मतदान किया, आई आई हैव द राइट टू डिमांड। बिल्कुल। हमें वो करना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल अग्री करता हूँ। तो मेरा इसमें आखिरी सवाल होगा, फिर हम लोग फिर से पढ़ेंगे और फिर से बातचीत करेंगे कि हमारा जो हिंदू समाज है, क्या उसमें इतनी राजनीतिक जागरूकता है कि वो अपने डिमांड्स को डिमांड करके उसको फुलफिल कराने की क्षमता रखे? पहले से तो जागरूकता बढ़ी है। मुझे लगता है हिंदू समाज को संगठित होना पड़ेगा। लोग एकता की बात करते हैं हिंदू समाज की, कि एकता एक विषय है, पर संगठित होना अलग विषय है। ऑर्गेनाइज होना बहुत अलग चीज है। कि आप अपने एक सिस्टम बनाइए, एसओपीज बनाइए, आप गवर्नमेंट को कैसे अप्रोच करेंगे, क्या ईमेल्स लिखना है, क्या पत्राचार करना है। उसमें थोड़ा हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा।
हिंदुओं को पता होना चाहिए कि किसे अप्रोच करें, कैसे अप्रोच करें। और बात यह भी है कि हिंदू की संस्थाओं में बहुत सारी बाधाएं भी तो लगाई जाती है ना। जैसे उनके लिए मान लीजिए जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, उनके जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, उनको इतना पावर है कि वो संगठित हो पाए। अब मैं हमारे तो आपको मंदिर को रोकूंगा, मैं आपको रोकूंगा, क्षमा कीजिएगा। वो क्यों है, वो क्यों किया गया है? क्या ये चीज पता है हमें कि उनको ये जो पावर दिया गया है वो क्यों दिया गया है? क्या इसके बारे में हमने कभी शोध किया है, बारे में सोचा है, एज हिंदू समाज इटसेल्फ? मुझे लगता है उसमें, अब मैं इस पे 100% श्योरिटी से नहीं बोल सकता, नहीं, पर आपकी ओपिनियन, वी आर एक, गिविंग आवर ओपिनियन, एक दैट बेसिक इज। आइडिया मुझे है, एक नेहरूवियन सेक्युलरिज्म का माइंडसेट है, हम्म जिसमें माइंडसेट यही है कि क्योंकि आप बहुसंख्यक हैं तो आप अत्याचारी हैं, हम्म इसीलिए हम्म आप में ग्लानि का भाव होना चाहिए। और हम्म अल्पसंख्यक क्योंकि वो अत्याचारी थे तो उनको विशेष अधिकार मिलने चाहिए, और हम्म बहुसंख्यक पर अधिक बाधाएं लगानी चाहिए। तो उस मानसिकता से देखा जाए तो हम पर एक के बाद एक सरकार ने बाधाएं लगाते चले गए, चाहे हमारे पर्सनल लॉज हो। मंदिर तो पहले से भी अंग्रेजों ने हमारे ले लिए थे, तो मैं उसका नहीं कहूंगा, पर आप, मुझे लगता है कि आफ्टर 47 मंदिर पर और कंट्रोल बढ़ा है, ये भी हुआ है। वहाँ के उस पर हम्म टैक्सिंग करना और वो सब करना। और फिर आरटी बाद में आए, बहुत 2005-6 में ड्रैकोनियन एक्ट्स। तो मुझे लगता है वो जो माइंडसेट है कि मेजॉरिटीज आर ऑलवेज द ऑपरेसर, बिना हिस्ट्री को कंसिडर किए कि हमारे साथ एक्चुअली ऑपरेशन हुआ था, तो वो भी एक दिक्कत है। क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट और आइडियाज को इंपोर्ट करना कि मेजॉरिटी ऑपरेसर माइनॉरिटी ऑपरेस्ड वाली, तो वो हमारी नीतियों में अंतर्निहित है, हमारे संविधान में, तो उसका भी प्रभाव आज पड़ता है। मैं आपको एक और देता हूँ रीजन, जो मेरे ख्याल से, ये मेरे ओपिनियंस है, पर्सनल ओपिनियंस है, कि नेहरू वॉज अ पॉलिटिशियन, करेक्ट? तो अगर वो पॉलिटिशियन थे, तो एक पॉलिटिशियन 80% वोट बैंक को हटाकर 10%, 15% वोट बैंक को ज्यादा प्रिविलेज क्यों देगा? क्या उन्हें नहीं पता है कि 80% लोग हिंदू थे इस यहाँ पर? क्या उनको हारना था चुनाव? मुझे लगता है मुझे लगता है उस समय हिंदुओं के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं नहीं नहीं, वोट मैं ये करने नहीं के बोल लिए। रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं पॉलिटिशियन हूँ, अगर मैं नेहरू हूँ उस टाइम पे, अगर मैं देखता हूँ कि भाई 80% हिंदू है और 10-15% दूसरे और रिलीजन के लोग हैं, तो मैं ऐसे लॉज क्यों बनाऊंगा जो 80% को डी इंसेंटिवाइज करे? ऐसा क्यों है? हमें चीजों को सोचना पड़ेगा लॉजिकली, फ्रॉम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो आशाएं हैं, अपने जो विचार हैं, उनसे ही सोचते हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, वो राजनीतिक पार्टी एक राजनीतिक इन्वायरमेंट में चुनाव लड़ती है, उसको उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और हमें एक वोटर के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि भाई, अगर हमें हमारे जो डिमांड्स हैं उनको मनवाने हैं, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे अभी दीदी ने कहा कि हर एक व्यक्ति किसी किसी कारण से बीजेपी को वोट करता है, या कोई भी और व्यक्ति कोई भी और पार्टी को वोट करता है। जब ये कारण एक हो जाएंगे, क्योंकि जो अपोनेंट है वो एक ही कारण पे वोट देती है, और हम जो हैं वो बहुत सारे कारणों से वोट नहीं देते हैं। तो जब तक ये राजनीतिक चेतना नहीं जागेगी हम हिंदुओं में, कि हमारे कुछ कोर डिमांड्स होने चाहिए जो मेरे लिए भी समान हो, आपके लिए भी समान हो। आज क्या है कि आज काशी और मथुरा को लेकर हम चाहते हैं कि वहां पर मंदिर बने,
पर बहुत लोग नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि भाई हमें स्कूल चाहिए, कॉलेजेस चाहिए, जॉब चाहिए, हमें मन से क्या क्या फर्क पड़ता है। जब तक ये डिफरेंसेस नहीं जाएंगे, तब तक एज ए ट्रस्टेड पॉलिटिकल वोट बैंक हम नहीं बन पाएंगे, तब तक ये परिवर्तन नहीं आएगा। बोलिए। हाँ, देखिए ये यिंग एंड द यांग वाली बात है कि मुर्गी पहले आई ना अंडा। क्योंकि बात ये है कि अगर स्कूलों में पढ़ाया जाएगा कि सेक्युलर बनो, तो हम्म। आप काशी और मथुरा कैसे मांगेंगे? ठीक है। और आप यदि काशी और मथुरा नहीं मांगेंगे और हिंदुत्व पर बात नहीं करेंगे, तो स्कूल में परिवर्तन कैसे आएगा? क्योंकि उसको लगेगा ही नहीं कि परिवर्तन आएगा। तो ये बात है कि मुर्गी पहले हुआ ना अंडा हुआ। तो मेरा मानना है कि 10 साल से जब 3 बार आपको चुन करके लाए हैं, तो भाई कुछ तो मानसिक परिवर्तन हुआ है लोगों में। तो आपको थोड़ा सा साहस दिखाना पड़ेगा। और जैसे मैंने उदाहरण दिया, वक्फ बोर्ड में लोग साथ थे, नहीं तो महाराष्ट्र नहीं जीते। बटेंगे तो कटेंगे में हरियाणा नहीं जीतते। ठीक है। अब कोई बोलेगा कि नहीं, ये हिंदुत्व के कारण जीत हुई नहीं है, ऐसे ही अन्य कारणों से ही जीते हैं। तो भाई 230 सीट नहीं आते महाराष्ट्र में, मैं इतना बोल सकता। तो जब आपको हिंदुत्व पर जीत मिली है, तो फिर आपको फिर स्टेप लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। और बीजेपी थोड़ा स्टेप लेने में थोड़ा थोड़ा सा ये आनाकानी करती है, यही मेरा कहना अच्छा, है। बिल्कुल। आपकी बात सच है कि हम्म। राजनीति की विवशता होती है, मैं मना नहीं कर रहा। और जैसा कि आपने नेहरू के विषय में कहा था, देखिए उस समय ब्लैंक स्लेट था। उस समय भारतीय जो जनता थी वो अ, इतनी जागरूक थी भी नहीं। और जहां तक आप बोल रहे अल्पसंख्यकों की बात, भारतीय अल्पसंख्यकों की बात, उस समय उनके उनके पास भी देखा जाए तो कोई विकल्प था नहीं कांग्रेस को छोड़कर। वो जो विकल्प था वो चली गई पाकिस्तान। ठीक है। अब उनके पास भी केवल कांग्रेस ही था, हम्म। हिंदुओं के पास भी कांग्रेस ही था। और हम्म। नेहरू थे थोड़े अंग्रेजों से प्रभावित व्यक्ति। अ, और अंग्रेजों की सोच हिंदुओं को लेकर थोड़ी सी नकारात्मक थी। तो उन्होंने भी ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जहाँ उनको अपनी संस्कृति के प्रति एक हीन भावना थी। फिर ऊपर से उन्होंने कम्युनिज्म अपना लिया, मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी का। तो वैसी ही व्यवस्था बढ़ती चली गई। तो कभी ना कभी इस व्यवस्था को ऊपर पुनर्विचार पुनर्विचार क्या, अब तो पुनर्विचार हो रहा है, अब धीरे धीरे काम करना पड़ेगा। आपने कहा धीरे धीरे, तो समझे। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा एक प्रेजेंटेशन जो हमने बनाया है इस स्पेसिफिक चैप्टर के ऊपर ही। तो लेट मी जस्ट गो थ्रू दैट। तो रिवैम्पिंग इंडियन हिस्ट्री एजुकेशन explore the necessity of revising Indian history textbooks, focusing on addressing biases and enhancing representation of diverse narratives. टेक्स्ट दिख रहा है, जरा कंफर्म कीजिएगा। इज द टेक्स्ट विजिबल? हाँ दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर सकते तो अच्छा रहेगा वो जो। एक्चुअली बड़ा करेंगे तो वो आउट ऑफ फोकस हो जाता है, फिर भी मैं करता हूँ। हाँ, अच्छा, ठीक है, जो है तब ठीक है। हाँ, अब ठीक है। आई थिंक आई हैव डन टू 50%, तो अब शायद दिखना चाहिए सबको। हाँ तो ठीक है। ऑथर ने जो आर्टिकल लिखा है उसके हिसाब से हमने भी ये बनाया है प्रेजेंटेशन। तो ये समराइजेशन है आर्टिकल का कि आर्टिकल क्या कहना चाहता है और क्या व्यू पॉइंट्स हैं ऑथर के। तो उनका कहना है कि नैरो व्यू पॉइंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, current textbooks focus mainly on northern India and limiting regional perspective। तो जैसे हमने आर्टिकल में पढ़ा that the Indian textbooks that we read now only focus on Delhi and surrounding region, and they make a passing remark on other regional histories like history of southern India, history of east like Ahom kings। तो वो मेंशन नहीं होते हैं। तो जो भी इतिहास
पढ़ा जा रहा है वो केंद्रित है आपके दिल्ली और आसपास के इलाकों में। नेग्लेक्ट ऑफ हम्म। अदर रीजन्स, जो हमने अभी बात की कि हमारे जो ईस्ट में और साउथ में जो बड़े बड़े साम्राज्य थे, समृद्ध साम्राज्य थे, अहोम अहोम साम्राज्य 600 साल तक चला था, तो हम उसकी बात तो एक पेज में खत्म ही कर देते हैं, वी विल नॉट मेंशन हाँ देम। पर जो साम्राज्य 40 साल चले थे उसके बारे में 50 पेज लिख दिए गए हैं टू ग्लोरीफाई देम। हाँ। तो ये जो इम्बैलेंस है इतिहास लिखने का, इतिहास पढ़ाने का, उसको ठीक होना चाहिए। यहाँ पर हम्पी का आप देख सकते हैं, चित्र है, द फेमस चैरियट ऑफ हम्पी। हम्पी बहुत ही अच्छी जगह है, हम्म। आप सबको जाना चाहिए हम्पी देखने के लिए। Comprehensive historical education. Textbooks need revisions to include diverse narratives for a holistic understanding. ऑथर ने ये कहा कि आप दोनों बातें बताएं, आप ये बताएं कि ताजमहल बनाया गया था, आप ये भी बताएं कि सैकड़ों हजारों मंदिरों को तोड़ा गया था, उनके अवशेष से कुतुब मीनार बनाया गया था। वहां पर जो अवशेष है वहां पर दिखते हैं कि वहां पर जो मस्जिद है वहां पर मंदिरों के अवशेष हैं, आप वो भी बताएं। उसके बाद आप छोड़ दें जो पढ़ रहे हैं कि वो क्या ओपिनियन ड्रॉ करेंगे, आप अपने ओपिनियंस इन्फोर्स ना करें बाय ओमिटिंग important facts about Indian history which are visible till now today. हम्म। We'll go to our second PPT. देखिए वही बात है ना, देखिए आपने दिल्ली को ही अपना केंद्र मानकर इतिहास लिखा और सारे जो क्षेत्रीय इतिहास है उसको कहीं ना कहीं महत्व नहीं दिया। तो एक जो आपको एक कहानी पिरोनी है पूरे भारत की, कि भारत एक सभ्यता है, एक पूरी सभ्यता जो आपस में जुड़ी हुई है, वो आपने किया ही नहीं। आपने भारत को दिखाया कि दिल्ली और टुकड़ों में बटा बटा कुछ कुछ छोटा छोटा राजा शासन कर रहे थे। आपने भारत को एक एक इकाई के रूप में कभी नहीं दिखाया अपने कहानी या नैरेटिव के माध्यम से। और फिर जब अंग्रेज आए तो उसको कह दिया कि अंग्रेजों ने भारत बनाया, उससे पहले भारत था ही नहीं। ओके, वेरी गुड। और तो कोई अभी आए नहीं है हमारे पास, तो आपने ये जो कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। तो इस पर एक और चीज है कि हमारा जो सेकंड स्लाइड है वो कह रहा है कि दिल्ली सेंट्रिक पर्सपेक्टिव, इंडियन हिस्ट्री ऑफन फोकसेस ऑन दिल्ली इग्नोरिंग अदर रीजन, नेग्लेक्ट ऑफ सदर्न एम्पायर। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बीइंग नेग्लेक्टेड इन आवर हिस्ट्री। Empires like Satvahana, Vijayanagara, and Chola are underrepresented. जो अगर आप साउथ को देखें तो साउथ इज ऑलमोस्ट 40% ऑफ द लैंड मास ऑफ भारत, और हमने उस 40%, मैं बोल रहा हूँ अप्रोक्सीमेशन, ज्यादा कम हो सकता है, कि एक बहुत ही प्रॉस्परस, इंपॉर्टेंट और गढ़ रहा है भारतीय संस्कृति का, उसको उसको हाँ। हमने इग्नोर ही कर दिया है हमारे इतिहास में। क्यों? क्या ये डिलिबरेट है? देखिए अब ये डिलिबरेट, मुझे लगता है कि ये मुगली मानसिकता है जो हमको आज के भी हम्म, भारतीय राज्य में देखने को मिलती है, जो आपको हम्म, बॉलीवुड में भी देखने को मिलेगी। कि हम्म, बॉलीवुड पर आरोप लगते रहे हैं कि वो दक्षिण भारतीयों का मजाक उड़ाती है, उनके तिलक हम्म, का, उनके पहनावे हम्म। का, उनकी भाषा का। ठीक है, क्योंकि मानसिकता ये थी कि ये लोग सब बाहर के लोग हैं, इनकी थोड़ी संस्कृति अलग प्रकार की है, ये हमारे जैसे नहीं है, इन जो इंडो गैंजेटिक प्लेन जैसे नहीं है। क्योंकि मुख्यतः जो इस्लामिक शासन था वो इंडो गैंजेटिक प्लेन और वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से वो वाला क्षेत्र में था। तो वो अपनी है और सब पराये है, और ये मानसिकता कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडियन हिंदूज में भी आ गई। हम्म। क्योंकि हम जैसे साउथ वाले को देखते आ रहे, ये तो साउथ का है, ये तो बंगाल का है, बंगाली है, ये नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति तो कुछ अलग ही है। ये कहीं ना कहीं वो मानसिकता आपको आज भी दिखती है लोगों में। और इसीलिए तो ये आप देखिए झगड़ा होता रहता है
क्षेत्रवाद के नाम पर, कि साउथ वाले बोलते कि नॉर्थ वाले हमारी संस्कृति को जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है, क्योंकि हमको जो मुगल द्वारा संस्कृति लाई गई नॉर्थ में वो अपनी लगती है, पर जो हमारी मूल सनातनी परंपरा दक्षिण में वो पराई लगती है। बिल्कुल। ये एक तो मान्यता ये लगती है। जो मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, ये जो आप कह रहे हैं कि ये पढ़ाई लगती है, जो मुगलिया संस्कृति है, क्या ये अंग्रेजों के बाद शुरू हुआ? क्योंकि मैंने इतिहास में पढ़ा है कि यूपी से पंडित जाते थे केरला के जो राजघराना है, वहां पर जो मंदिरों में वहां पूजा करते थे। तो ये जो आदान प्रदान है, ये जो कनेक्शंस हैं, क्योंकि आज भी आपका जो तमिल संगम है, बहुत सारे तमिल व्यक्ति आज, मतलब वहां पर वो 100 सालों से वहां पर रहते हैं, वाराणसी में घाट में रहते हैं वो, वहां पर रहते हैं 100 सालों से। तो ये जो कम्युनिकेशन है, जो साउथ से हमारे नॉर्थ में था, बीइंग के गंगा जो है, वो जल है, वो उतना ही पवित्र हमारे लिए है जितना किसी तमिल के लिए है या कन्नड़ के लिए है। तो ये तो एक मान्यता है। तो ये कब पैदा हुई, कब आया ये ऐसा कि हम अलग हैं, ये जो भावना थी? जब मैं मुगली मानसिकता कहता हूँ ना, तो मैं हम्म। मुगलों की मानसिकता कहता हूँ, ठीक है। तो हम्म। पहले पहले जब मुगल आए थे तो वो वाली मानसिकता संभवतः उत्तर भारतीयों में नहीं थी। बाद हम्म। में मुझे लगता है हमारा इतिहास लेखन ऐसे किया गया जो उस प्रकार की मानसिकता को बढ़ावा देता है कि ये लोग अलग हैं, हम्म। ये हमारी कल्चर नहीं है, हम इनके जैसे संस्कृत निष्ठ भाषा नहीं बोलते, हम लोग की भाषा उर्दू और फारसी जैसी है। तो ये मुझे लगता है बाद में उसका प्रभाव पड़ना आरंभ हुआ, और कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने भी बढ़ावा दिया होगा उसको, कि एक स्टेट सैंक्शन होता है तो उसका प्रभाव आप पर धीरे धीरे पड़ता है, वहाँ की जनता पर एक झटके में नहीं पड़ता कभी। तो वो हुआ है। और हाँ, आना जाना, संस्कृति का आदान प्रदान तो रहा है। मैं भी वाराणसी जाकर देख चुका हूँ, वहाँ पर प्रत्येक राज्य से लोग आते हैं, दक्षिण उत्तर। अयोध्या गया था तब भी मैंने देखा था कि वहाँ पर मैं अलग अलग भाषाएं सुन रहा हूँ, हर प्रकार की भाषा सुनी मैंने उधर। तो ये अभी भी है, पर मुझे लगता है अभी हमारे इस बात को और बढ़ावा देना चाहिए कि हम कैसे जुड़े हुए एक सभ्यता के रूप में, उसको और पढ़ाया जाना चाहिए, उस पर और शोध कार्य तो अवश्य होना चाहिए, वो नैरेटिव को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब आप देख लीजिए, बाद में मिशनरियों ने आके बहुत घपला किया है तमिलनाडु में, जिससे इतना इतना वो पृथकतावादी हो गए अपने सोच व्यवहार में। तो वो भी है। आपने ऐसे ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया है, नॉर्थ ईस्ट में आपने एक मिशनरी को भेज दिया, आपने अपने साधु संत को जाने नहीं दिया, मिशनरी को भेज दिया, तो अब वहां पर भी इंसर्जेंसी की स्थिति हो गई। तो बहुत सारे गड़बड़ किए हैं मैं तो कहूँगा बहुत ब्लंडर्स है, इसका कोई अंत ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो द लैक ऑफ रीजनल अवेयरनेस, the Ahom kings of Assam who resisted Mughals for 600 years are often overlooked. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कही जा रही है। Implications of historical bias. This misrepresentation diminishes the cultural heritage of diverse states. जो सांस्कृतिक हेरिटेज है वो फैला हुआ है पूरे भारत में, and that cultural heritage is not being represented as it should be in our history books, which is not being happening. Inclusion of southern empires, highlighting contributions of Chola and Vijayanagar empires. Exclusion of southern empires. Southern Indian empires are often missing in historical narratives. Chola and Vijayanagar empire contributions. Advanced architecture, trade, culture by these empires. Brideshwara temple example, UNESCO World Heritage Site showcasing Chola architectural excellence, rich cultural traditions, southern states' contribution in art, music, and literature. This is very important, which was mentioned by Abhay, that
in mainstream Bollywood movies, the people from the southern areas of Bharat are always represented as something of a mockery, not very serious, a kind of a passing remark. Okay, they are not non-serious people. They don't know culture. They don't know music. So everything was mocked, and that is a very Though, interesting, though their music and culture is far better than North India, far more developed. far more superior, I would say. Yeah, yes, absolutely. If you look at their use of classical music in their movies, it's outstanding. Bollywood always stole and copied jazz music from Hollywood, while they used their own classical music and mixed it with Western instruments and the kind of music they create, the way they use their classical dance, the way they use their attire, their traditional attire. Bollywood and North Indian film industries have given up on all of that. क्या बात करते हैं ये लोग इंफीरियर साउथ का कल्चर मुझे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगता है साउथ के कल्चर को देखकर मैं रह Yes, चुका हूँ चेन्नई में 1 साल एक बात मुझे याद आ रही है कि अपर्णा सेन, द फेमस एक्ट्रेस, डायरेक्टर एंड इंटेलेक्चुअल of Kolkata, she mentioned one of the interviews. I still remember that interview where she mentioned, Aparna Sen, that we, East India and North India, like in terms of culturally overall, we have a lot of common things in terms of music, ragas, जो है वो काफी एक है. So the cultural understanding, awareness of North Indians, including East Indians, about the North Indian culture, heritage, music, sense of beauty. तो उन्होंने ये बात कही थी. Aparna Sen said that we are unable to appreciate the beauty of Southern Indian languages, music, in so many ways. So, because we do absolutely not understand the language of that region where even I live now, we are unable to appreciate the beauty, the heritage, the beauty, language, and their what do you say, the heritage and beautiful language, music that they have, architecture that they have. We are unable to appreciate it, and that is something which is very unfortunate. yes I feel so sad I mean sad for us that we are not able to enjoy that and and the fact that they also have had dispensations which is against their indigenous culture in a way or which is misappropriating their culture. If you look at Dravidian ideology, is very much about eating up in your on your own culture in many ways. It's missionary influenced. और जैसे मैंने कहा कि Ajay, your voice is उसका लिरिक्स dropping. समझिए Ajay, your सॉरी voice is dropping. Could you repeat? अभी सुनाई दे रहा Yes, yes, go ahead. है? मैं अभी आपको 10 गाने रेकमेंड कर दूंगा ओके, तो आपको सुन हम के लोग ऐसा लगेगा आत्मा तृप्त हो गई और वो भी मैं अजय, हेलो अभय, आपकी आवाज कट रही है. आप मेरे से एक बार रिज्वाइन कर लीजिए, तब तक मैं ये पढ़ता हूँ. आई थिंक कुछ इशू है कनेक्शन में. ओके 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 ओके, आप रिजन कीजिए, मैं आपको फिर से डाल दूंगा. ना, टिल देन आई विल गो अहेड एंड रीड दिस पीपीटी. So, importance of inclusive narratives. Inclusion fosters appreciation for the diversity of Indian history, which we were talking about just a few minutes ago with Abhay. That we are unable to appreciate the cultural beauty and diversity of our southern states, its architecture, music, dance, because we don't know the culture and language enough. Very important part that the author talks about is the Indian maritime legacy, exploring India's trade and naval history. Indo-Roman trade, which happened in the Vijayanagar Empire and also in the Chola Empire as well, which is documented, and there are lots of books on that. So, Indo-Roman trade, significant trade showcasing India's ancient economic power. At one time,
India had 40% of the global trade which is going on in the known world. So there are few people who actually dispute that we had 40% of the trade into the global trade. That is because uh, Bharat had the most fertile land available in the whole world. Till today, India holds the most, in terms of percentage of its land mass, most fertile land available anywhere in the world. So Ukraine comes very close in terms of quality of land which can be cultivated food. But India overall has the highest percentage of cultivable fertile land available anywhere in the world. So in terms of its agricultural output, in terms of its output on handicrafts and other industrial products, so India had the 40% of the world trade at one time. So it's mentioned by the author that significant trade showcasing India's ancient economic power. Ancient Odia merchants, which is, I think, a lot of people do not know even within Oriya, that pioneered eastern sea routes yet often overlooked. So there is a tradition in East India where I think uh, exact month I don't remember, that when the rains happen, the monsoon rains happens in the month of June, June onwards when monsoon kicks in. So there is a festival where people make boats, and the author actually mentions this story in his one book as well, The Ocean of Churns. There's one more book by Mr. Sanyal, The Ocean of Churns, very interesting and important book, where he mentioned this specific tradition, where in the eastern India, at the monsoon times, when the monsoon starts, they would actually create paper boats and try to get the paper boats to float over the waters when the rains come in. So there is a link between the eastern India and the pioneers who were actually flying through the sea routes to do trade. Chola naval expeditions exemplified naval powers and cultural ties with Southeast Asia, which is overlooked in in our all history books altogether. हाँ वही ना कि हमने तो कभी इन्वेड नहीं किया किसी को. Am I It audible? is, yeah, yeah, you're audible. It is not about invasion. Like when we talk about invasions, correct. So there is invasion, and there is also a kind of what we say general warfare. Okay. तो दोनों में एक सटल डिफरेंस है कि इन्वेजन मेरे हिसाब से वो होता है कि आप लूट मार करने के लिए आते हैं, वो होता है इन्वेजन मेरे हिसाब से, कि आप आए ही हैं कि आपको मंदिर तोड़ना है, आपको वहां से जो सोना है, जो वेल्थ है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, लोगों की मारकाट करनी है और आपको लेकर चले जाना है. और एक होता है जनरल वॉरफेयर, जहां पर आप एक दूसरे को से लड़ते हैं, पर जो कॉमन सिटीजन है, जो वहां का वेल्थ है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं. So Cholas did invade the Southeast Asian regions for a trade dispute, not because they wanted to actually invade, plunder that land. That may happen because war happens, पर वो नहीं था. The invasion जैसे happened because of trade disputes. जैसे हमने पिछले बार भी बात की थी कि कॉलोनाइजेशन नहीं किया था चोलाओं ने. Exactly. पर वही बात है कि ये बोला जाता है कि हम तो किसी दूसरे देश में गए ही नहीं, ये बोला हाँ, जाता है ना कि ये बिल्कुल गलत है, ये कि बिल्कुल गलत है. हमने तो कभी किसी देश पर आक्रमण ही नहीं किया. चलिए इन्वेड का छोड़ दीजिए, पर हम्म हम्म कभी हम्म आक्रमण ही नहीं किया वाली बात. हम्म. तो हाँ ये क्योंकि बात तो. क्योंकि हमें ये बात चाहिए समझ, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, दैट वॉरफेयर वाज पार्ट ऑफ द वे पीपल बिहेव. तो उस समय आक्रमण करना, एक दूसरे राज्य को, अपनी राज्य की परिधि बढ़ाना, to actually expand your territorial boundaries, was a natural thing to do for every king. So, and we see this tradition as Ashwamedh Yajna, where you take a horse, you worship, you actually persecute the horse, and then the horse goes, and people, and wherever the horse goes, you will fight the king.
So this kind of like dharmic warfare, where warfare was part of statecraft itself, and that did not include plunder, that did not include burning of crops. तो वो एक डिवोशन नहीं था, वो एक पार्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस था जो हमारे भारत में चल रहा था बहुत सालों से. इट वाज अ पार्ट ऑफ नेचुरल वे ऑफ एक्सपेंडिंग योर बाउंड्रीज. These brutal invasions which came from the West Asia was something different altogether. So that's why I like refuse to like equate with the invasions which came in the form of Islamic invasions and the way war was fought over various reasons by the Cholas. तो वो दोनों एक नहीं थे in very हाँ, aspects of it. उन वो दोनों आक्रमणों के स्वभाव और उद्देश्य और मानसिकता उसके पीछे की बहुत अलग थी. ये तो मैं भी मानता हूँ, दोनों में उस प्रकार से कोई तुलना नहीं. बिल्कुल. तो वो बात आपकी सच है. So ancient Indian innovation, contributions in science and technology. जो we were talking about previously when the author mentioned that we now see a lot of things in social media, that we invented nuclear weapons, we invented helicopter. Okay. And this narrative has come about because the ancient Indian science and technology, which was really existing with proofs, was not mentioned in our histories at all. So the gap was created artificially by the historians, and that was filled by a kind of pseudo history, which is now we see in our Instagram reels, in our Facebook posts, in our YouTube podcasts and interviews. Advancements in various fields. Ancient Indian व्हाट्सएप excellence यूनिवर्स. in, yeah, WhatsApp University कहते हैं. Ancient Indian excelled in metallurgy and medicine and math. Current textbooks often overlook these significant contributions. Aryabhatta astronomical work. Aryabhatta's astronomy laid the foundation for future studies. And we can see the great chariot of in Hampi. So people who have not gone to Hampi, I would request people to go and visit and see what we had done in our ancient times. Case of Emperor Ashoka, a critical examination of historical narratives. Misrepresentation of Emperor Ashoka. Historical narratives often misrepresent Ashoka, oversimplifying his story. Pacifism narrative, complexity. Ashoka's transformation to Buddhism is complex, involving violence. Historical evidence, continued aggression. Texts like Ashoka Vadna show Ashoka's ongoing aggression post Kalinga War, teaching complexities for understanding. It is crucial to teach these complexities for accurate historical understanding. Misconceptions of nationhood. The term Indian in inverted commas suggests national identity emerged during British colonialism. Colonial colonial influences. Analyzing misconceptions and perspectives. Ignoring indigenous perspective. Historical narratives often overlook the established Indian civilization existing before colonial rule. Very important, the author has raised this point that our textbooks narrowly focus on the British era achievements and a kind of fostering nationhood based on 200 years of history or 100 years of history rather than going back to 5,000 years or 10,000 years of history where we had Ved, we had Upanishads, we had Cholas, we had Mauryas, and they were like, okay, we were not them. They are not part of our cultural continued historical presence. Dual, yeah, हाँ, Abhay, go ahead. जैसे जैसे बोलते हैं ना कि जैसे अंग्रेजों के समय एक हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा का ये हुआ था, उत्थान हुआ था, जिसको हम लोग बंगाल रेनेसांस के माध्यम से भी जानते हैं, या मरा
महाराष्ट्र में जो सावरकर कर रहे थे, बहुत लोग कर रहे थे विभिन्न क्षेत्रों में, वो हमारे इतिहास को जोड़ रहे थे कि हमारे प्राचीन काल में क्या था, हम कौन थे, हमारे वेद, हमारे उपनिषद। पर बाद में जब हमें इतिहास पढ़ाया गया ना, इनमें से कुछ राष्ट्रवादियों के कुछ बातों को बहुत चालाकी से चुना गया और उनको हमारी प्राचीन इतिहास से काट दिया गया कि नहीं नहीं भाई, ये जो आधुनिक समय में, अंग्रेजों के समय में जो हमारे राष्ट्रवादी विचारक थे, उनके राष्ट्रवाद के विचारधारा का संबंध हमारे सभ्यता के इतिहास से नहीं था, जो 5,000 वर्ष या 7,000 वर्ष पुराना, वो अलग है। ये नया कुछ बनाया है इन्होंने, पूर्ण रूप से कुछ नया और कुछ अलग सा ही बनाया। बिल्कुल। So now dual narrative include both positive and negative aspects for critical evaluation. Very important that the author talks about that. The author is not saying, which is now quite of a narrative as well, that the so-called right wing would rewrite the history and would impose their own opinions on history rather than on the critical analysis and putting forth all the information available in terms of historical context. So the author is saying, no, that is not the case. What we want is, you have ignored various important chapters of Indian history deliberately or otherwise, whichever it is construed, restore them. Provide information on what good was done by the Mughals and also include information what bad they have done. It is not about, okay, we will remove the Mughal history from our history books. We are saying include the bad things which were deliberately or otherwise have been omitted, ignored, to create a certain perspective narrative which is built over time, and that needs to be fixed. Provide all the information which should be there to create a holistic history, to teach a holistic history to our children, so that they themselves can analyze critically what they want to believe in rather than feeding a certain kind of narrative which the secular Marxist historians did in their own way by writing history from their own personal opinions. They have imposed their ideology on the history books, which should not have been done. Diverse sources use archaeological findings and oral histories for richer insights. This is something which is overlooked by a lot of media, a lot of people. Oral history. We do not consider oral stories as historical events, which is we see in many aspects that in India, in IKS, Indic knowledge system, so we had Shruti, we had Smriti. So Shruti is oral history, Smriti is memory. Abhay, you want to expand more on this? I think you know more about it. The Shruti and Smriti tradition of Indian knowledge system. अ, मुझे बहुत गहरा ज्ञान नहीं है, पर जितना पता है, श्रुति इज व्हाट इज टू व्हाट टू बी हर्ड, और स्मृति होता है टू बी रिमेम्बर्ड, व्हाट इज टू बी रिमेम्बर्ड। तो पहले क्या था कि लिपियों का विकास नहीं हुआ था, तो जो भी ज्ञान देना होता था मौखिक रूप से दिया जाता था, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। फिर जैसे जैसे थोड़ी आधुनिकता आई, मतलब आपने एक लिपि का विकास कर दिया, तो उसको फिर लिखित माध्यम से रखा जाने लगा। इसीलिए वेद के जो पांडुलिपियां हैं वो बहुत नए हैं, और जो परंतु वास्तविक रूप से जो वैदिक ज्ञान है वो कौन से समय से आता हमको ठीक से पता नहीं। और स्मृति जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो माने जाते हैं कि ये जो है, ये आप समय के साथ बदल सकते हैं। एक तो श्रुति में आप समय के साथ बदल नहीं सकते उसको, वो शाश्वत काल के लिए शाश्वत काल का सत्य है। श्रुति स्मृति में आप उसको समय और परिस्थितियों के अनुसार
उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं, उसमें आप नए रूप से उसे लिख सकते हैं। और वो स्मृतियां भी श्रुतियों के आधार पर लिखी जाती हैं कि आप उस श्रुतियों को किस प्रकार से समझ रहे हैं और किस प्रकार से लागू करने का प्रयास कर रहे हैं समाज में। तो मेरा ज्ञान बहुत ही सामान्य है इस विषय पर। अ, बिल्कुल। तो मतलब ऑथर ने मिस्टर सान्याल ने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है जो इग्नोर कर जाते हैं हमारे इतिहासकार। तो हमारे जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज हैं, स्पेसिफिकली आदिवासी कम्युनिटीज, उनके पास कोई लिखित स्क्रिप्ट नहीं है, पर उनके पास एक ओरल हिस्ट्री है। और वो ओरल हिस्ट्री, क्योंकि ये ओरल है तो उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं, उसमें कुछ एडिशनल चीजें ऐड की गई हैं, पर वो बिल्कुल ही मनगढ़ंत है, वो बिल्कुल ही इमेजिनेशन है, ये नहीं है। वो जो ओरल हाँ इतिहास है उसमें उसमें स्पेसिफिक इवेंट्स, जगहों और पात्रों के नाम है। देयर आर, you find people, places and events which took place, and these are recorded as oral histories because the our indigenous communities did not had a script. And and our in this Indian landmass, we had a significant people of Adivasis who comprised a large mass of the population, a percentage, and we have जैसे completely ignored that history altogether. And that is not injustice, but actually a travesty, a crime itself. We are missing out on indigenous knowledge which these Adivasis have in terms of medicine specifically, and we have been like deprived of this because we only say, okay, if you find something while digging, that's history, others are not. How that can be true? हाँ, मतलब आप देखिए, मैंने सुना है कि उत्तर पूर्व के जितने भी आदिवासी थे, उनके भाषाओं की लिपियां पिछले 60-70 वर्षों में बनी है, और वो भी अंग्रेजी लिपि बनी है। पहले उनकी भाषाओं की लिपियां थी नहीं। तो उन्होंने अभी जाकर पिछले 60-70 वर्षों में लिपियों का विकास किया, वो भी अंग्रेजी लिपि में उनकी भाषा लिखी जाती है। भारतीय लिपियों में नहीं लिखी जाती है। भारतीय लिपि में लिखे जाने का विरोध करते हैं क्योंकि वहां पर विदेशी मिशनरियों का इतना प्रभाव है। तो उस चक्कर में क्योंकि उनका इतिहास लिखित नहीं है, तो हम उनके ज्ञान को ही पूरा नकार दिया। अब इससे क्या होता है कि ये जो समुदाय है, जो आदिवासी समुदाय है, इनके मन में भी एक आक्रोश उत्पन्न होता है कि हमें नकारा जा रहा है, हमारी संस्कृति को, हमारी भावनाओं को, परंपरा को नकारा जा रहा है, हमें तो पूरा ही अनदेखा कर दिया है। और बाद में इसका आरोप लगता है हिंदू सभ्यता पर कि अरे ये लोग हमको अलग रखते, और फिर उनके विरुद्ध आक्रोश उत्पन्न करके इनको हमारी सभ्यता से काटा जाता है और बाद में इनका धर्मांतरण किया जाता है। तो आप देखिए कि कितना अन्याय है ये उनके साथ भी, उनके साथ मुख्यतः, कि उनके संस्कृति को इस प्रकार से मिटाया जा रहा है और उसका बिल्कुल, दोष हम पर लग रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। So now critical thinking encourage students to form their own interpretations. हमारे इतिहासकारों ने, जैसे आपने कहा कि 1970 के बाद से, after 1970s, the history books were written by Marxist leaning intellectuals, historians, and they have put their own ideology into history books, which is not at all what history books should be about. It should be about information. You write history as it is, and you let the reader decide what they want to choose, what they want to believe in, what they want to form their opinion on, which is not been done. पर दादा, ये इसमें मैंने मार्क्सवादियों की ओर से एक तर्क सुना है, क्योंकि हम्म, वो बोलते हैं कि इतिहास इतना बड़ा है, ठीक है, हम्म, विशेष रूप से जब हम विद्यालयों में पढ़ाते हैं। अब विश्वविद्यालयों में तो सब नहीं पढ़ते हैं इतिहास, तो हम्म, विद्यालय में तो सब पढ़ते, तो वो इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में पढ़ाई जाती है। तो हम्म, उसमें बोलते हैं हम तो सब कुछ नहीं डाल सकते ना, इतना इतिहास है कि क्या क्या पढ़ा और कितना पढ़ा। हम्म, तो इसीलिए भी हमको चयन करना पड़ता है कि कौन सा विषय पढ़ाना आवश्यक है और कौन सा विषय पढ़ाना आवश्यक नहीं है। ये मार्क्सवादी लोग या जो भी पहले इतिहासकार रहे हैं,
जो हम्म। अभी भी व्यवस्था में बने हुए, वो लोग ये तर्क देते, तो इस पर आपके क्या विचार है? मेरे विचार बिल्कुल मतलब सीधे हैं कि अहोम जो राज्य था, उन्होंने 600 साल तक मुगलों मुगलों का संघर्ष किया, उनको हराया है 600 सालों तक। ओके। विजयनगर साम्राज्य इतना समृद्ध था कि विजयनगर साम्राज्य रोम से ट्रेड करता था, और विजय साम्राज्य के जो ट्रेडर्स थे वो जाते थे रोम। वहां पर अपना उनका अपना गिल्ड था, ट्रेडिंग गिल्ड था, और रोम से लोग यहाँ आते थे विजयनगर में, और हमारे जो ट्रेडर्स थे वो चाइना में जाकर ट्रेड करते थे। सो वो कितना समृद्ध था। ठीक है। आप 600 साल पुराने जो साम्राज्य हैं उसके बारे में एक पेज ही लिखते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और जिसने 40 साल राज किया उसके ऊपर आप 50 पेज लिखते हैं। तो ये कहाँ का लॉजिक है? मुझे भी तो जरा समझाए ना, कि आपने चूज करना है तो आप किसको चूज करेंगे? आप क्या एक 40 साल का जैसा उसको चूज करेंगे कि 600 को चूज करेंगे? तो उनका हाँ, लॉजिक कहाँ है? फिर कोई मान लीजिए ये तर्क दे सकता है कि किसने प्रभाव अधिक डाला इतिहास पर। क्या आपको लगता है कि जो आक्रमणकारी आक्रांता आए थे, उन्होंने इतिहास भाई को अधिक उन प्रभावित किया, कैसे इसीलिए प्रभाव उनका इतिहास? कैसे प्रभाव किया? जो मुगल थे उसको 19 बार हराया अहोम किंग्स ने। कहाँ का प्रभाव? जैसे मुगल आक्रमण करते रहे, और उनको अहोम किंग्स ने 600 साल तक हराया। तो कहाँ का प्रभाव? एविडेंस होना चाहिए ना उसके 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 लिए। जैसे वे कह सकते हैं कि देखिए इन्होंने संस्कृति को प्रभावित किया, बहुत लोगों का मतांतरण करके। अब ये लोग तो मतांतरण को भी ये रंग देते कि लोग सहर्ष उन्होंने अपना मतांतरण करवाया, कोई बलपूर्वक बलात् रूप से नहीं हुआ था। तो वो तर्क दे सकते हैं कि मतलब वो इनका तर्क वो प्रभाव, इनकी नहीं नहीं, वो तर्क तो इनका आता ही नहीं है ना। आपके उन्होंने खुद लिख कर गए कि भाई हमने हमने हजारों मंदिर तोड़े हैं, हमने हजारों लोगों का मतलब लोगों को मारा है। तो वो तो लिख कर गए हैं खुद, मतलब वो अपने आप पे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ना, कि भाई वो अपने किताब में लिख कर गए कि हमने कितने कितने पर, मंदिर तोड़े हैं, कितने कितने पर लोगों को दादा हमने बिरयानी को तो नहीं खोपड़ियों का भूल पहाड़ सकते। लगाया है। बिरयानी ताजमहल को कैसे भूल सकते? ऐसे तो नहीं चलेगा। बिरयानी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब देखिए, बिरयानी के बिना देश होता? बिरयानी के बिना हम्म। खान पान क्या ही था नहीं हमारे पास? नहीं, बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही है कि भाई बिरयानी के बिना तो हम रह नहीं पाएंगे। मतलब शायद पूरा भारत ही ना मैं बिना खाए मर जाए अगर ना मिले बिरयानी तो। और इससे तो मैं हमारे बिरयानी में तो आलू भी है। ऐसे कैसे बिल्कुल चलेगा? बिल्कुल आपसे हम बिल्कुल एग्री करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी की ओर। टेक्स्ट बुक रिवीजन स्ट्रैटेजी, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट हाउ डू यू रिवाइज इट? One thing is that okay, suggest okay, we have given evidence, we have given our own thought process that why the Indian history needs to be rewritten. Now how it's written is more important than why it should be written. So it mentions textbooks revision strategies. No excuse for perpetuating outdated scholarships and biases of colonial Marxist historians. Indian historians tend to mix up the evidence with their opinions. Very important part. Opinions. Historians are not supposed to give their opinions. They are supposed to collect the evidence and based on the evidence write what is there, not put their own opinions, whether they are Marxist or otherwise. This happens everywhere to some extent. Extent. All history is written from some perspective. But mainstream Indian historians are notorious for doing so. Bias exists with me, with Abhay, with audience, with everybody. And that is part of nature we are. But are we supposed to enforce and inject our bias
in so many ways that it's only my bias which is evident, not others, that the evidence is not even mentioned and our opinion is there. So why we need evidence? Like if you're going to put your opinions as history, why you quote evidence, why you have evidence? Don't do it. Abhay. Yeah, I mean, the issue here is it is possible to have bias in your interpretation. It's okay if you have Hmm, an interpretational bias. But hmm, when you start omitting facts hmm, from books based hmm, on your bias, you don't even hmm. mention what exactly happened, or you selectively start putting omitting facts. That is unfair. You can give your interpretations and say that okay, this is my view on it, but when you start dividing Abhay. Mhm, biased, that is mhm. extremely unfair. Correct. So it says separation of evidence from interpretation. Authors must clearly distinguish facts from interpretations for transparency. Very important part where, okay, you are, as a human being, you will have a bias. Fine. We don't fight that thing. Even I will have a bias. But when I am writing a history textbook, you should mention that this is as per evidence and this is my opinion, so that the reader, if I am reading it, I will know that this portion is the opinion of the author and this portion is based on evidence. And it should be upon me to actually decide, critically analyze whether his opinion is correct or not, or to accept or not. Engagement with current research. Incorporate findings from archaeology, genetics, and climate science for accuracy. So our history books are not even history books. Our education system textbooks are notorious for being outdated. Like in some of the computer classes, kids are still taught how to write DOS commands. I mean, some books were there a few years ago. Okay. So पता our नहीं, हम history लोग books, असेंबली लेवल लैंग्वेज पढ़ते थे कंप्यूटर में. okay, yeah, but I तो think there are some people who are still learning a few years ago, not right now, few years ago, on DOS. Like I had, like when I was reading, like learning computer, I think 20 years ago, something we were doing DOS. So that is the case that, including history books, our textbooks are malignantly and quite habitually outdated. We do not incorporate, update, revise our textbooks as per latest research and findings, which is actually a very, very bad thing because, so let's take the example of Aryan invasion theory. Okay. So this Aryan invasion theory is now debunked with evidence, with genetics data quite long ago, and still our historians, our intellectuals, our books are still teaching it to this day. नहीं 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 नहीं, डिबंक नहीं हुआ है. मैं आर्यन इन्वेडर हूँ, ये मेरे हम्म, अस्तित्व पर आघात है. कोई अच्छा, डिबंक नहीं हुआ है, सब झूठ है. अच्छा, तो आप मगर इसके प्रमाण हैं, तो आप इसके प्रमाण हैं? हाँ, मैं स्वयं प्रमाण. अच्छा, बिल्कुल. अ, फिर भी चलिए, मजाक एक और, पर आप हम्म, जो कह रहे थे कह लीजिए. हम्म. So, okay, so I'll finish it with encourage critical thinking, enable students to explore history and draw their own conclusions. Yeah, आप कहिए. हाँ, मतलब जैसे मैंने कहा ना कि आपको इन- देखिए, आप लेफ्टिस्ट्स के जब रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं ना, ये दादा कर रहे हैं, हम्म, तो वो जो रिसर्च करते हैं वो टॉप क्वालिटी है. वो उसमें तथ्य दिखते हैं. पर ये लोग जब हमारे विद्यालयों में लाते हैं ना, उसे बातें, इतिहास की पुस्तकें जब लिखते हैं, उसमें वो अपने मानसिकता घुसाते हैं. उसमें फिर वो सारे तथ्यों को प्रस्तुत नहीं करते और अपने विचारों के आधार पर फिर उन इतिहास के पुस्तकों का लेखन करते. तो ये कितना, मतलब क्या मैं कहूँ, इसको आप धूर्तता कह सकते हैं, या परम धूर्तता, कि आप जब शोध करते तो उसमें आप एकदम
सत्यान्वेषी हो जाते हैं। और जब जब हमें पढ़ाने की बात आती है तो उसमें आप अपने विचारधारा की मिलावट करके हमें परोसते और हमें अपने विचार बनाने का अवसर नहीं देते और हमें एक प्रकार से मानसिक रूप से आपका दास बनाने की चेष्टा करते बिल्कुल। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो अभी सनातन ने कही है, जो मुझे भी कहना था। लेट मी शेयर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे कार्यक्रम में, इन आवर प्रोग्राम वी हैव मिस्टर बिजित, डॉक्टर बिजित प्रशांता, हु रोट अ बुक कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ हिंदू मेशिया एंड हिंदू जेनोसाइड्स। You can see this here. So this book is being nominated for the best non-fiction book category. Okay. So I would request everybody. I am pinning the also the link here. So please, if you have read his book, if you like his book, please go ahead and vote for this. Okay. So that our most favorite author, who has done so much to actually uncover the hidden history where the atrocities against Hindus are documented in a very authentic manner with references, that book gets the right kind of publicity and encouragement, and people buy it and learn it. Okay. So I would request everybody to go to this website, okay, frontlist.in, PALF, and vote Mr. Bijit Prasanta book, the history. Just hold on. Yeah. The history of Hindu Mesia and Hindu genocides, author Mr. Bijit Prasanta. Please vote for his book. If you like the book, if you want more books to be written like this, and for open the link and go ahead and vote for him. Thank you very much. Yeah, Abhay. हाँ, सभी लोग, सभी जन कृपया जाकर वोट दें। मैंने दे दिया है। बंगाली अस्मिता को बिल्कुल, जीवित रखना बहुत आवश्यक है, इसलिए जाकर वोट दें, बिल्कुल, नहीं तो मुझ जैसे हिंदी इम्पोजर आके हिंदी इम्पोज कर देंगे। बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं कि हिंदी इम्पोज ना हो, तो जल्दी जाएं और विजित दा के किताब को वोट दें और उनको विजयी बनाएं। हम चलते हैं हमारे कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री एजुकेशन, नीड फॉर इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन। बहुत ही अच्छे विचार हैं। मैं इसको हाइड करता हूं। एड्रेसिंग हिस्टोरिकल गैप्स, let me fix this. I think there is, yes. Addressing historical gaps include diverse narratives that shaped India over centuries. ये जो है कि इतिहास, the history that we read, okay, it is primarily a kind of history which is written from a perspective of, unfortunately, of invaders. Like we read that, okay, invaders came from West Asia and they defeated us and ruled over us, and they failed to mention that Mughals failed to conquer Assam and the Ahom kingdoms defeated them in number of times, 19 times, and that is not mentioned. So one-sided narrative and history was perpetuated on our history books to demean, to demoralize us, that okay, we are a defeated people, which we are not. Empowering students, foster critical thinking and appreciation of Indian history, the right kind of history where our history, our ancient history, which we have as a heritage, is not being represented as it should be. We have Rishi with us. Hello, Rishi, our Our regular guest. Yeah, Rishi, you can speak. Yeah, I'll go on Rishi, mute. you can speak. I'll go on mute. Yeah. Namaste, Dada. Namaste, Abhay. And namaste to Namaste. all of the Namaste. audience in the comment नमस्ते। section. नमस्ते। Please, Dada, continue the discussion. It was going good. Okay, fine. Okay. So, empowering students, fostering critical thinking and appreciation of Indian history, where
more diverse data, more diverse history is taught on all regions of our Indian subcontinent. So it gets a representation from the east, from the west, from the south, and from the north. Not only right now, what we read is only a kind of North Indian history, which does not reflect what our history is all about. Inspiring future Even North generation. Indian, even Go North ahead. Indian, the kind of North Indian history we read is written from an invader's perspective. Exactly. So The this is fact that our many fifth. North Indian Rishi, you can go on mute. had many, sorry, Go ahead. Go ahead. hello, Go ahead. yeah. Go ahead. We can hear So you. even the way North Indian, yeah, even the way North Indian history is written, जैसे उत्तर भारत का भी इतिहास लिखा गया, वो भी आक्रमणकारियों की दृष्टि से लिखा गया। ये नहीं बताया गया कि महाराणा प्रताप ने कैसे प्रतिकार किया, राजपूतों ने कैसे निरंतर प्रतिकार किया, फिर आपके बप्पा रावल में ने कैसे अरबी जो आक्रमणकारी थे उनको कैसे तो Uh, ये आपको निरंतर देखने को मिलता है कि नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री भी ढंग से नहीं दिखाया इन्होंने। कन्नौज के राजा ने क्या किया, कुछ नहीं। बिल्कुल. So this is our conclusion for this stream today. Apply insights to your success. Okay. Perhaps one way forward for the next generation of textbook authors is to separate the hard evidence from their interpretations. This will result in two good outcomes. First, it will make the author's opinion more transparent. Second, it will encourage students to think more critically and draw their own conclusions. तो ये भी मेरा कंक्लूजन है. माय पर्सनल कंक्लूजन इज दैट our history books needs to be rewritten. We It is not obvious or required to actually omit what is already there, but add which was missing and omitted deliberately, add them into the history books so that the good, bad, and the ugly, everything is in front of the history students, and they will read about it and they'll form their own opinions. The author's opinion also needs to be separated from the hard facts so that the books are more transparent in terms of what they are reading about, what I am reading about. So this ends our reading for today. Now we will be taking questions and opinions from the audience. Rishi, you can speak if you want to share any thoughts. And I will be back in and I 1 minute. back in 1 minute. I have nothing much to speak on this topic because um, many things have been spoken enough, I guess. So maybe Abhay can start a discussion on certain topic that there can be furthermore means based on that. Abhay, do you want to speak something? अ, देखा जाए तो बहुत अधिक बोलने को नहीं है। फिर भी जैसा कहा, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग जिस जिस विषय पर बहुत बात होती है, भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्रिटिकल थिंकिंग का बहुत अभाव है। हमें अपने से कुछ सोचने ही नहीं दिया जाता है। जो हमारे जो हमें हमारे दिमाग में ठूसा जाता है, उसे ही हमें गले से नीचे उतारना पड़ता है। अपने कोई विचार नहीं रख सकते आप, और यदि अपने विचार रखते हैं और ऐसे विचार रखते हैं जो आपके शिक्षक के विचारों से थोड़े भिन्न हैं, तो आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप अपनी डिग्रियां आपको नहीं मिलेंगी, आप स्कूल में पास नहीं करेंगे। तो क्रिटिकल थिंकिंग का तो अभाव रहा है हमारे देश में, और उसका और परिणाम भी उसका देखने को मिलता है परिणाम कि हाँ, Yeah, that's तो true. हाँ,
I उसका guess. परिणाम So देखने को भी मिलता है उसका कि परिणाम देखने को इनोवेटिव माइंड नहीं है, रिसर्च जितना होना चाहिए वो नहीं है। Yes. yeah, the So now we focus will is yes. So now we will go ahead, Rishi. No, no, it's okay. So the focus has always been on, I guess, uh, trying to make the students be obedient, right? So always the pedagogical system which has been applied upon us is that uh, okay, mug up the facts. There are huge number of facts. You need to memorize them, and you need to be able to answer them when asked in examination halls. So if the objective is to make obedient people, then yeah, the last thing that they would want is to develop critical thinking methods within those students. Because आप जो पढ़ाओगे फिर बाद में वही अगर उठ के बोल बोलना चालू करते कि सर मैंने तो ये पढ़ा है इस बुक में, आपने जो अ, बताया है इन दी टेक्स्ट बुक वो तो गलत है, why are we reading these things? So it will be a huge problem for the uh, overall system to see that there is a sort of revolt within the so-called plebs whom we want to uh, make good clerks out of. So that's the last thing that you would want, and therefore no mechanisms of pedagogy is developed at all to create such critical thinking minded people, I guess. Okay, so this is a very interesting comment which Didi had made. That Abhay, you can also delve a little bit more into this. That perhaps the BJP leadership doesn't grasp the top-down impact because they come from middle-class backgrounds. What do you think? हाँ, कुछ हद तक तो सच्चाई है, क्योंकि आप जब एलिट्स के बीच में रहे नहीं हैं, ना आपकी शिक्षा व्यवस्था में कोई भागीदारी रही है, जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, जो आज तक हमारी भारत की नीति तय करते रहे हैं, उसमें आपकी कोई भागीदारी रही नहीं है और आप धरातल से उठे, तो आपको लगता है कि हम धरातल से ही पूरी भारत को परिवर्तित कर सकते हैं, और जो ऊपर से नीतियां बनती है उसका जो प्रभाव पड़ता है, हमको वो समझ में ही नहीं आता कि ये होता कैसे है और उसका प्रभाव कैसे पड़ता है। तो ये एक प्रकार से सच भी है कि आप नीचे से उठे तो आपको पता नहीं है कि जो शीर्ष पर बैठता है उसका क्या प्रभाव होता है, उसकी नीतियों का। Hmm. धरातल तक कैसे पहुंचता है। धरातल तक कैसे पहुंचते हैं? Yeah, Rishi, go ahead. Yeah, so ये जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड वाला जो ऑस्ट्रेलेशन है यहाँ पे एजवी दीदी का, आई थिंक दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द एटीट्यूड, राइट? मतलब बीजेपी के जो मतलब sorry, not to name a party, means those who have taken the chairs right now, so called. So when they speak, even they tend to judge themselves based on the standards which are applied by the opposition, right? कि हम लोग ज्यादा मतलब secular है, they will say, right, that you are pseudo हाँ, seculars, we are real secular. So जब या आप वी अपने आर मोर opposition के फेमिनिस्ट we are देन more यू। feminist than you. Yes, yes. So एब्सोल्युटली यू we आर are more एग्जैक्टली uh, बात है। we are more yeah. So बिल्कुल बिल्कुल we are more supporting the specific communities or specific grievances of those communities. We are much more better than you. So आप जब मतलब उनके ही मतलब प्लेइंग फील्ड में उनके ही रूल्स पे अगर खेलने लगे तो the last thing you would do is change the system at all. So this is shown by this middle class background, I guess, क्योंकि उनके भी तो एजुकेशन वैसे ही हुए हैं ना जो पिछले एलिट्स ने चाहा है कि, so they cannot, I guess, come up with something extra like innovative to counter them in as such. पर शायद उनके जो बैकग्राउंड है
वन हेल्प वुड बी उनके बैकग्राउंड में ही अभी ज्यादा वो जो इंडियन मतलब भारतीय वैल्यूज है वो अब तक टिके हुए हैं, सो दे दे प्रोड्यूस सम सॉर्ट ऑफ अ ऑपोजिशन स्टिल। आई गेस दैट्स माय पॉइंट। यस। सो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न, काफी अच्छा पर्सपेक्टिव है जो हमने शायद उस तरह से नहीं देखा है, क्योंकि जो सो कॉल्ड राइट विंग है, ओके, और द फोर्सेस ऑफ नेशनलिज्म है, उनको फंड कर रहे थे व्यापारी बेसिकली, और दोज पीपल केम फ्रॉम मिडिल क्लास जो ये काम कर रहे थे। पर ये दिस इज नॉट टोटली ट्रू। तो एक तो बात ये है कि हाँ, जो सो कॉल्ड राइट विंग नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं, वो उनको वो उस इलीट का हिस्सा नहीं थे, जो जैसे कि what I have seen is that the 20% of the elite, okay, who have the money, who have the resources, who have the contacts, okay, who have the right kind of connections globally, not even regionally, and they actually drive the narrative. They actually build the narrative. Uh, they invest money and resources to actually sustain the narrative itself over a long period of time. And वो जो elite है, that is going to be, and that can be left wing, that can be right wing, that can be any other wing you can talk about. So they don't really matter actually. So if you are a rich person, it doesn't really matter who is in the government, correct? You can use your influence and connections to get whatever you want. So that is something which is the case. But they, as they are not part of that sphere of influence, they don't understand how that functions, and the way they try to do it, they will not be able to, they were not able to succeed enough that we see a significant change in on ground. So Abhay, correct, when we, and also Rishi, when you talk about that, there has been one line change in terms of Babri Masjid and Ayodhya, okay, over a 10-year period, and that kind of failure has a lot of dimensions, a lot of parameters. We need to judge that. So it may be also be that they do not trust the academics because it has been heavily left-leaning Marxist for so long, and because they are not part of that ecosystem itself, they do not know how to navigate that treacherous path of being part of that 20% of the higher echelons. Abhay and Rishi both. Uh, if Rishi wants to go first, he can, or I can go first. फर्स्ट नो नो अभय, तू ही बता दे पहले, फिर मैं बोलूंगा। हम्म, हाँ, आप जब एकेडेमिया में रही ही नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा एकेडेमिया होती क्या है। एग्जैक्टली यही बात है। क्या कि आपको पता ही नहीं उसका काम क्या होता है, या आपको लगता है एकेडेमिया मतलब ही लेफ्ट। एकेडेमिया राइट विंग हो नहीं सकता, एकेडेमिया मतलब ही लेफ्ट विंग काम है, ये लेफ्ट विंग ही चीज है। ये एकेडेमिया शब्द ही लेफ्ट है, एकेडेमिया का काम ही लेफ्ट है, ऐसा लग सकता है। तो मुझे लगता है भाजपा को वो लगता है, पर भाजपा को देखना पड़ेगा कि हमारे पास अब इतने इतिहासकार आ गए हैं। विक्रम संपत बोल दीजिए, जेसाई दीपक ने काम किया है। अब वो इतिहासकार है नहीं है वो एक अलग विषय हो सकता है, पर अब बहुत लोग काम कर रहे हैं। आभास मल्दियार, आप बहुत लोगों की पुस्तक पढ़ते हैं। तो भाजपा को इनके साथ बात करके एक अलग प्रकार से एक नए प्रकार की एकेडेमिया की रचना करनी होगी, और इनको थोड़ा सा भारतीय इतिहास से भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा, विश्वविद्यालय में आचार्यों की परंपरा, उनका अर्थशास्त्र जैसे या अन्य ग्रंथ लिखे जाना, अपने विचार प्रकट करना, उसको समाज में लागू करने की बात करना, ये बहुत प्राचीन परंपरा है। ये कोई वामपंथियों द्वारा लाई गई नवीन परंपरा नहीं। ये कहीं ना कहीं
इस वर्ग की भी समस्या है कि ये लोग धरातल का इतना काम करते हैं और धरातल पर ही इनका ध्यान इतना केंद्रित है कि ये लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते, जो पढ़ने का महत्व है वो नहीं समझते, और एकेडेमिया में पढ़ना ही सबसे बड़ा कार्य होता है। तो एक प्रकार से मैं कहूंगा जो ब्राह्मणत्व है, पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना, उसका अभाव है, और उस ज्ञान को कैसे लागू करे उसका अभाव। यहाँ पे मुझे एक समस्या यहाँ पे दिखती है। मुझे एक समस्या दिखती Yeah, Abhay, Abhay totally said it correct, I guess. I guess they were never habituated with the whole process of academia, right? So they do not know as to how to navigate the whole uh, the swamp. I guess I should say it's a swamp. It's a very vicious swamp. I have caught some glimpse of it in my university as well. So uh, some sort of I guess अभी तो पावर में है कुछ मतलब हैबिचुएशन हो भी रहा है शायद, तो मे बी दे विल वर्क आउट. इट्स अ स्लो प्रोसेस आई गेस, तो हो जाएगा. आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट. मतलब कुछ तो मतलब रिएक्शंस भी आ रहे हैं, तो वो भी सोच रहे होंगे कि या मे बी वी शुड डू समथिंग, एंड मे बी दे आर डूइंग इट. वी डू नॉट नो. लाइक पब्लिक में अभी नहीं आ रहा, पर पीछे शायद हो रहा है, अच्छे काम हो रहे हैं. आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट. आई वुड लाइक टू बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट एक्चुअली. So now Vimash Dada can maybe comment on it much more. Okay, two things which are very important that Rishi talked about. One is that they do not know how to navigate this vicious swamp where you have crocodiles and anacondas there to grasp you and pull you down, metaphorically, obviously. So, but the thing is, which is important to be noted, is that when we are talking about they do not know how to navigate, okay, or do not part of the ecosystem, so they are faltering in many ways. Okay, I think more responsibility, the current political situation, the current political uh, ecosystem, the way it functions now, okay, it is heavily dependent on the voter to actually tell the political party what I want in a unified voice, which I try to actually profess and put it as one of the most basic things we need to do as a voting bloc. The current democracy that we have, we cannot change the system right away. Even if we want to, we can't change it. So now we can't change it. Now let's work with it. Use the system to work for us, not against us. And the biggest impediment that I see from my perspective is that we as Hindus are unable to create a sustainable, loyal voting bloc for the political parties to trust. Until the political parties trust us that they will vote us, they will not going to do what we want them to do. That is a fact which we need to accept, understand, and try to build a unified voting bloc on basic principles. We do not need to agree on everything. Agree on few specific things. Okay. And tell, okay, we want these 5 things to be done. This is our vote. If you want our vote, get this done. If you do not do it, you not get our vote. Until that specific, what I would say, political awareness is there in numbers which are critical to for a party to win. We will have work board, we will have Prachura Worship Act, we will have RTE. Nobody can stop it because we as Hindus are not a sustainable voting bloc. Until that message is given to the political parties, nothing will change. That's my last mission. Also, Dada, I Yeah. guess
demands from the Hindu bloc should not be of some token, right? Like some token, माने ये मंदिर, sorry, I will not say this. Some monument बना दो या कुछ reclaim this, reclaim that, or some freebie. I think it should be a very substantial policy that should be asked as a demand. Like देखिए do this policy, तब आपको वोट मिलेगा वरना नहीं मिलेगा. Maybe that's what you are hinting at, or something. देखिए मेरा इस पे एक ये है कि जैसे हमें अपने मंदिर वापस लेने हैं, ठीक है। उसके लिए आप एक मंदिर मत मांगिए कि काशी मथुरा चाहिए। आप बोलिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन चाहिए, जिसमें एक पूरे प्रक्रिया चाहिए, जो भी मंदिर हमारे क्षतिग्रस्त किए गए हैं, जिसके पास जिनके लिए हमारे पास प्रमाण है, और उस प्रमाण के ऐसे-ऐसे मानक तय कीजिए कि उस प्रमाणों से हमें जो भी मंदिर चाहिए वो मिल जाए। वो व्यवस्था मांगिए मंदिर लेने की। एक मंदिर मत मांगिए, मंदिर हमको चाहिए, पर केवल एक मंदिर मत मांगिए, वो व्यवस्था मांगिए कि हम जितने हमारे मंदिर है वो हम वापस ले पाए एक लीगल वे से। अब हिंदू लोग पॉलिसी का वैल्यू नहीं समझते, जो हिंदू वोटिंग ब्लॉक है, कि पॉलिसी के माध्यम से आप कितना समाज को प्रभावित करते हैं। हम एक कोई हमको हाथ में झुंझुना पकड़ा जाता है, हम मान जाते हैं। ये हमारी भी समस्या है। हमको बोलेगा कोई कि अरे ये अभी अतुल सुभाष के केस में क्या हो रहा है, ज्यादातर लोग बोल रहे हैं उसके गुनेगारों को पनिश कर दो। फिर क्या होगा, लाखों लोग जो आत्महत्या करे उसका क्या। आपको मांग करनी चाहिए व्यवस्था में परिवर्तन की, कि हमको सिस्टम बदलना है, उसमें जो लॉज जो इस प्रकार के हैं जिसके कारण ऐसा हो रहा है वो बदलना है। वो हिंदू लोग वो सिस्टमैटिक समझना, ये पॉलिसी कैसे फ्रेम होता है और उस पॉलिसी को फ्रेम करने से उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो नहीं समझ रहे। वो बोलते हैं एक काम हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। नहीं, एक इंस्टेंस से सब कुछ ठीक नहीं होता है। आपको एक पूरी व्यवस्था खड़ी करनी पड़ती है, जो आपके प्रतिद्वंदी बहुत अच्छे से समझते हैं। ये एक अभाव दिखता है। ऋषि, आपको कुछ कहना है, और I'll put the finishing comment. No. Dada, you can comment on it. ओके, आई थिंक आज जो हमने किताब पढ़ा, जिससे विचार विमर्श किया, डिस्कशन किया, जो एंड में आपने बात कही है वो शायद एक उपलब्धि है हम सब के लिए। फॉर ऑल ऑफ अस इट्स अ काइंड ऑफ व्हाट यू से पॉइंट ऑफ discussion, point of inference that we Hindus need to focus on policies. We need to focus on systematic changes to the system itself rather than asking for a specific one bit thing. And that is something which is missing, and hopefully in coming years and months and decades, that kind of system actually is created, it's sustained and built over time to mitigate what we lack now. On that front, we will end this session. So before we end this session, let me again go to my screen sharing and request everybody that if you want to buy this book is available in multiple platforms. This is Crossword. You also have Rupa Books, the primary publisher. Here you can buy the physical book as well as the e-book. So go ahead. This is one of the best books I have read in terms of non-fiction category, where it teaches me, it has taught me and changed my perspective on a lot of things. This book, the physical book, and also the copy that I have. So go ahead, buy the book, and also buy the other books from author. Like the author is a prolific author. He has wrote a lot of books on children, on history,
on policy, very lucid language. The language is very easy to understand, very short. It doesn't take a lot of time. You can read 2 or 3 articles in 1 hour at max. And we finish the article in about 20 minutes. But there were so much things to discuss that we have continued for 2.5 hours almost, 2 hours 10 minutes. So go ahead, buy this book, and we will be continue to read few the articles of this book. They are very interesting, very engaging. So till then, next time, Jai Shri Ram, Vande Mataram to everyone, and see you on next stream. Thank you. जय श्री राम। जस्ट अ स्मॉल थिंग, Yeah, ये पॉलिसी पर अभी कुछ दिन से कुशल मेहरा को मैं सुन रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि हमारा जो चैनल है अब वो पॉलिसी पर ध्यान देगा, पॉलिसी की चर्चाओं पर। तो देखिए, इस बात को हिंदू पक्ष को बहुत अच्छे से समझना होगा कि पॉलिसी जब तक नहीं बदलेगी तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला, कोई आकर आपका उद्धार नहीं करेगा। आप एक एक उदाहरण की मांग नहीं कर सकते, आपको पॉलिसी चेंजेस चाहिए कि एक मिल गया तो चल गया नहीं। हमको पूरा एक सिस्टमिक फ्रेमवर्क चाहिए जिसके अंतर्गत हमको ये व्यवस्था के अंतर्गत हमको मिल सके जो हमें चाहिए। और इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आप सभी का नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। सबका धन्यवाद, अभय, ऋषि और हमारे दर्शकों का जिन्होंने सवाल किए, जिन्होंने कमेंट्स किए, सबका धन्यवाद। और हम फिर मिलेंगे। वी विल अगेन मीट इन आवर नेक्स्ट इन कमिंग वीक्स। सो थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, वंदे मातरम।